viewers, you're watching 6 Stories at 6 and I am Rakshita Mishra with you. The top stories will be Lokpal's luxury move. Yes, the anti-corruption watchdog is now under scanner. It has raised eyebrows with the luxury that has demanded the tender for luxury cars. And the second story will be the namaz at Shaniwar Wada that has stoked a massive row. We'll tell you all about that. Story number 3 is the curious case of the death of former DGP's son. Now, there is an FIR filed against the father and the mother themselves on this. And also, viewers, how Pakistan is crumbling from Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa. We'll tell you all about that. And story number 5 is Japan's new Prime Minister, the first woman Prime Minister. We'll tell you all about her. And also what's happening in battleground Bihar, all the latest updates, and also Republic TV's exclusive interview with Chirag Paswan, where he has opened up on seat sharing tussle with BJP and also on his chief ministerial ambitions. Let's start with the anti-corruption watchdog's tender. It's in the spotlight for its own extravagance. Republic exposes how the Lokpal of India has floated a tender for 7 luxury BMW Li-M sports sedans, each priced around 70 lakh rupees. A body meant to probe excess, now facing questions over its own. Take a look at this report. An institution meant to fight corruption now faces a question of credibility. A watchdog for the people, now chasing luxury wheels. The Lokpal's luxury drive. Exposed by Republic, it's rolling out in style. A new controversy erupted in the capital over the Lokpal's luxury tender. Republic has accessed documents that reveal the office of the Lokpal has floated a tender for 7 luxury BMW Li-M sports sedans. Each car valued at around 70 lakh rupees, taking the total cost to nearly 5 crores. The tender specifically mentions preference for long wheelbase versions and delivery at the Lokpal's Vasant Kunj office in Delhi within a month. इसीलिए लाया गया था कि करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था. अगर लोकपाल ही करप्शन में फंस जाएगा, 7 BMW गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, वो भी लग्जरी गाड़ियां, जिसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपया उसकी कीमत हो सकती है एक गाड़ी की. और लोकपाल को इतनी महंगी गाड़ी क्यों चाहिए? ये गाड़ी तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं मिलती है जितनी अभी लोकपाल जी चाह रहे हैं, और इतनी गाड़ी चाहेंगे. पब्लिक का पैसा का मिसयूज हो रहा है. और फिर भी लोकपाल के लिए मान लिया एक गाड़ी ली भी जाए तो ये 7 गाड़ियों का टेंडर किस लिए हो रहा है? तो ये भी एक अपने आप में ही एक करप्शन है. The revelation raises serious questions on why the anti-corruption ombudsman needs top-end luxury sedans meant for comfort, not accountability. As the tender details spark outrage, the optics of the Lokpal's luxury choice are now under the scanner. And now 3 women have been booked after a video showing them offering namaz at the historic Shaniwar Wada in Pune went viral. It has sparked a massive controversy. The incident led to protests from the BJP and Hindu groups who conducted a purification ritual at the site. Rajya Sabha MP Medha Kulkarni had earlier performed a similar purification ritual, and pressure has mounted after the Rajya Sabha MP demanded action against women. The case has ignited a wider debate over religious practices at heritage and public sites. Here's more. Pune's Shaniwar Wada, a symbol of Maratha heritage, became the latest flashpoint. This after a controversy erupted in Pune's Shaniwar Wada after a viral video showed Muslim women offering namaz at the historic site. मैं इस समय शनिवार वाड़ा के अंदर मौजूद हूं और जिस जगह पे मुस्लिम महिलाओं ने आकर नमाज पढ़ा था उस जगह पे पहले यहाँ पे आई मुस्लिम महिलाएं, चटाई बिछाई, यही जगह है, यहाँ पे चटाई बिछाया और इसके बाद यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ा. देख सकते हैं गोबर से लिपा गया है और ये लिपाई जो किया है हिंदू संगठनों ने यहाँ पे आकर शुद्धिकरण गौमूत्र और गोबर से
यहाँ पे लिपा गया, इसी जगह पर मुस्लिम महिलाओं ने आकर नमाज पढ़ा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू है, लेकिन यही जगह है जो विवाद की जगह है। 3 women are booked by the police for offering namaz at the historic Shaniwar Wada in Pune, prompting protests from BJP MP Medha Kulkarni and members of other organizations. एक बात इसमें 100% है कि नमाज अदा करने के लिए आपको मस्जिद दिए हुए है, आप मस्जिद में जाके नमाज अदा कीजिए ना। हम रेलवे स्टेशन में कभी जाते टाइम आप देखते हो क्या गणपति की मूर्ति बिठाई और रेलवे में हम आरती कर रहे हैं, या ऑफिस में गणपति की मूर्ति बिठाई या उधर ये करते। आज हमारा जो पूरा ये है वो बात ये है कि आप हिंदुओं को क्यों हर टाइम अत्याचार करते हो, आप किसी मस्जिद में गणपति क्यों नहीं बिठाते हो। BJP MP Medha Kulkarni and other members of right-wing outfits protested and performed purification rituals at the spot where the namaz was offered. मेरी मांग ये है कि गुनाह दाखिल होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वहाँ नमाज पठन किया। नमाज अपने अपने घर में पठन कीजिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती, अपने अपने घर में कीजिए, अपने अपने प्रार्थना स्थल में कीजिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ। ASI के जो नियम है उसके अनुरूप ये नहीं किया, इसलिए गुनाह दाखिल, और सभी को मालूम है ये कि नियम क्या होते हैं। और दूसरी बात, जो वहाँ के अधिकारी थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। जिन्होंने उनको तो परमिशन दी, लेकिन मास्क लगाकर वीडियो जो निकाल रहे थे उनको परमिशन नहीं दी, उनके ऊपर भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये मेरी मांग है। The incident has sparked a political war of words, with ruling alliance partners in Maharashtra divided over the issue. NCP Ajit Pawar faction accused BJP leader Murlidhar Mohal and local MLA Siddharth Shirole's aide Kulkarni of attempting to communalize the matter by trying to purify the area, and demanded that a case be filed against Kulkarni instead. Reacting to the controversy, Maharashtra Minister Nitish Rane had earlier stated that Shaniwar Wada is a symbol of Hindu valor and close to the community's heart. शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा, हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हजी अली के बाहर खड़े रहे और वहाँ हनुमान चालीसा का पठन चालू करे को तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। जहाँ प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहाँ करना चाहिए। The controversy has highlighted the long-going debate about religious practices and cultural heritage sites. In Maharashtra itself, there have been a number of similar incidents, from illegal constructions to prayer controversies. Maharashtra is witnessing a surge in communal disputes in the recent past. And Haryana police have booked former Punjab DGP Mohammad Mustafa and his wife and former Minister Razia Sultan along with their daughter and daughter-in-law on charges of murder and criminal conspiracy in connection with the death of their 35-year-old son Akhil Akhtar, an advocate at the Punjab and Haryana High Court. He was found dead at his residence on the 16th of October in mysterious circumstances. Here's a report. A powerful cop family, now at the center of a shocking controversy. Secrets, betrayal, and allegations that could shake Punjab's corridors of power. A son's sudden death now raising more questions than answers. A pre-recorded video hinting at abuse, threats, and a murder plot. मेरे को हर रोज लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। Police probe intensifies. Neighbors and digital evidence point to foul play.
The son of a former DGP, Muhammad Mustafa, was found dead at his Panchkula residence. While the family claims it to be drug overdose, a pre-recorded video has turned the case on its head. In a 16-minute recording, 35-year-old Akil Akhtar accused his father of an illicit affair. बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। He also alleged a chilling murder conspiracy involving his mother and sister. Akil claimed mental harassment, physical abuse, false detentions and threats to ruin him financially. मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, व्हिच इज ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा बस। Neighbor Shamsuddin Chaudhary filed a complaint. कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रज़िया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। कंप्लेनेंट के द्वारा अपनी जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है। He urged the police to probe the suspicious death and consider digital evidence, call records and social media posts. Police have now registered a case against Muhammad Mustafa, ex-minister Razia Sultana, their daughter and daughter-in-law under sections 103 subsection 1 and 61 BNS. In this case now, an FIR has been registered against the former DGP of Punjab, Muhammad Mustafa, and his wife Razia Sultana, who has been the cabinet minister in the former Captain Amrinder Singh government. So they both have been booked. Apart from that, if you talk about in the FIR, 2 more names have been registered, in which one is the wife of Akil Akhtar and one is the sister. So a total of 4 names have been registered in the FIR. Investigators are examining every angle as questions mount over whether it was a tragic drug overdose or was it something far more sinister. In Pakistan, a sudden surge of violence has put security forces on high alert, and the situation is in fact slipping out of their hands. We're talking about Pakistan Army Chief. Now, there has been a wave of coordinated strikes under the so-called Operation Al-Khadak, even as Baloch freedom fighters have opened a fresh front in the restive southwest. There have been reports of in fact, police officials being taken into captivity, taken hostage in Khyber Pakhtunkhwa as well. Meanwhile, 3 Pakistani army officers have been killed in Balochistan. Here's more. In a dramatic escalation of violence, the TTP has unleashed 12 brazen attacks on Pakistan's security forces in past 24 hours. The strikes, part of TTP's intensified Operation Al-Khadak, targeted key areas in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, underscoring the group's growing audacity despite diplomatic overtures. Amid these coordinated assaults, a fresh challenge has emerged from within Pakistan's own border, as the Balochistan Liberation Front has claimed the responsibility for an attack on Pakistan's paramilitary forces in South Balochistan. Reportedly, at least 4 personnel were killed and 3 others were injured when BLF fighters ambushed a paramilitary vehicle in Mand. Meanwhile, in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province, the TTP rebel has taken 2 police personnel hostage in the Banu area. The abducted corpse, identified as Nahidullah and Eid Muhammad, were on patrol duty when they were overpowered.
These attacks came even after Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif warned that the fragile ceasefire with Afghanistan depends entirely on Taliban's ability to rein in cross-border terrorism. His remarks followed the Doha talks mediated by Qatar and Turkey, which saw both sides agree to halt hostilities. And it's a historic day for Japan, where a woman has been elected as the country's Prime Minister for the very first time. 64-year-old Sanae Takachi charted history as Japan's 104th Prime Minister and the first female from the lot, with a clean win of 237 votes of the 465 votes cast in the lower house of Parliament. Here's a quick report. Japan celebrates a monumental election with its first ever female Prime Minister appointed today. 64-year-old conservative Sanae Takaichi became the 104th Prime Minister of the country and is set to be officially sworn in this evening. She reportedly won 235 of 465 votes cast in the lower house of the parliament to become the Japanese Prime Minister. Known as Japan's Iron Lady and a protege of former PM Shinzo Abe, this win also marks a conservative politician becoming Japan's fourth leader in 5 years after winning a simple majority in the country's lower and upper house. Her most imminent duties upon appointment include the announcement of a new cabinet, who will then head to the Imperial Palace for an attestation ceremony and their first cabinet meeting. As of this morning, she was already moving ahead with forming a cabinet ahead of her formal elections as Prime Minister. No lawmakers from the JIP, which is also known as Nippon Ishin no Kai, are expected to join the cabinet. This development also follows her Monday agreement with the Osaka governor Hirofumi Yoshimura, who led the JIP, also known as Nippon Ishin no Kai, as she was searching for a political partner. As part of the agreement, both parties will work together on several key reforms, including reducing the number of lawmakers in Japan's parliament by 10% and overhauling the social security system. As she steps into power, she is slated to take over the reins of a country of 120 million people, many of whom are struggling with high inflation and rising costs, while also having to tackle the country's discontented voters, some of whom voted for far-right parties after smearing discontentment with the mainstream politics. And now only 15 days to go, and the battle for power in Bihar is just reaching a fever pitch. NDA and Mahagathbandhan are locked in a fierce contest. Jan Suraj threatening to upset both giants. Now, allegations of candidates being poached, internal rifts within alliances are flying thick and fast. Meanwhile, key players like Chirag Paswan also have his ambitions to become Bihar Chief Minister one day. Well, he said that in Republic TV's exclusive interview. Take a look. With only 15 days left for Bihar elections, the state is set to decide the fate of key players, including the ruling NDA and opposition Mahagathbandhan. And the third player, Jan Suraj, who could play a crucial role as a kingmaker and reduce seats of both alliances. Ahead of elections, Jan Suraj chief has hurled series of serious allegations against BJP, saying that the party is trying to influence Jan Suraj candidates to withdraw. In past 4 to 5 days, 3 declared Jan Suraj candidates who filed their nominations were forced to withdraw their nominations. ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं, ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। The BJP shortly issued a response to Jan Suraj chief, alleging the party is promoting a fake narrative. Meanwhile, independent MP Pappu Yadav made an open offer to Nitish Kumar. The pro-Congress MLA said that the party will be ready to welcome Nitish back into alliance. नीतीश जी
चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। कौन सीएम होगा बिहार का? कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। On the other hand, opposition camp is facing internal rifts, and it's clearly visible as candidates are filing nominations against each other. Congress and the RJD have fielded candidates against each other in 5 constituencies. In 4 constituencies, Congress and CPI candidates are facing each other. After deadlock, the Mahagathbandhan NDA ally JDU took a dig at the Grand Alliance. JDU's Rajiv Ranjan Prasad described the tensions in Mahagathbandhan as existential crisis. Ahead of elections, Republic caught up with LJP Ramvilas chief Chirag Paswan in an exclusive interview. The union minister gave insights about the campaign and preparations for the elections. मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा होऊंगा कि अगर 29 सीटें मिलने के बाद 0 विधायक वाली पार्टी को, 5 सीट मिलने के बाद 1 सांसद वाली पार्टी को, अगर उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो आपसे बड़ा नाशुक्रा और कोई नहीं हो सकता। मेरी चिंताएं उस वक्त, पहली बात तो ये मोबाइल बंद कर देना और ये सब र्यूमर्स हैं। मैं और प्रधान साहब भी, हम लोग भी खूब हंसते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं बैठ के, क्योंकि मेरी उस वक्त उनसे बात हुई है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन बिटवीन, मैं फ़्लाइट में था जब मेरा 1.5 घंटे के लिए मेरा मोबाइल बंद था। अब उस चीज़ को अगर किसी ने ये बना दिया हो कि वो बंद, बट बहरहाल वो मेरे और गठबंधन के भीतर की बात है। जब हमें एक दूसरे से कोई एतराज़ नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज़्यादा कोई मायने हैं। चिराग पासवान, सो ऑफकोर्स वन डे मैं मानता हूँ कि ज़ुबान में 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं। कतई मैं अपने मुख से कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलूँगा जो इवेंचुअली मैनिफेस्ट हो जाए और मैं उसका रिग्रेट करूँ। तो ज़रूर मैं एक दिन मैं चाहूँगा कि मैं बिहार का नेतृत्व करने का मौका मुझे बिहार की जनता दे। पर वो हाँ मैनिफेस्ट करते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने? ऑफ कोर्स, व्हाई विल आई नॉट डू दैट। बट वो दिन आज हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मुझे सब कुछ आज नहीं चाहिए, बट जब आए तो स्थिरता के साथ आए, और इतना धैर्य है मुझ में कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर सकूं। As Bihar heads into high-stakes election, political temperatures are soaring, with alliances under stress, new players emerging, and allegations flying across the spectrum. And that's all we could pack in this edition of 6 Stories at 6. We'll be right back with Live and Breaking. Don't go anywhere. Amity has been ranked